स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन नेट पे बहुत ज़्यादा आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, reliability ensures the validity. Option B, validity ensures the reliability. Option C, reliability and validity are independent of each other. Option D, reliability does not depend on objectivity. The correct answer is reliability and validity are independent of each other. So why is that? First of all, reliability means in the context of research, the reliability of a method refers to the extent to which were the same study to be repeated, it would produce the same result. For this to be case, samples needs to be representative, questions and processes need to be uniform, and data would generally need to be quantitative. So that means that कि जब कोई भी क्वेश्चंस का आंसर बार बार जब रिपीट होता है, एक ही आंसर देता है, उस क्वेश्चन का एक ही आंसर आते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद बार बार करने के बाद सिर्फ एक ही रिजल्ट आते हैं, उसी को हम लोग रिलायबल बोलते हैं। And what is the meaning of validity? Validity refers to whether a test measures what it aims to measure. It is the quality of being well-grounded, sound or correct. तो the answer should be the correct. तो validity क्या refer करता है कि हमारा जो question है उस question का correct answer आता है। तो reliability और validity एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो they are independent of each other. ये दोनों एक दूसरे के ऊपर depend नहीं करता है। एक आंसर रिलायबल है इसका मतलब ये नहीं कि वो वैलिड भी होगा, और एक आंसर वैलिड है इसका मतलब ये नहीं कि बार बार वही आंसर आएगा, दैट मीन्स कि वो रिलायबल होगा। सो द करेक्ट आंसर इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन 2, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन Option A, the manipulation of variables. Option B, the conceptual parameters. Option C, replication of research. And option D, the survey of literature. The correct answer is the manipulation of variables. So, whenever we are doing experimental study, हम लोग क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स को लेते हैं और उन दोनों के बीच में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ है और एक सूरज है, तो पेड़ यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और सूरज क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम लोग सूरज को ऊपर कोई भी इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, सूरज को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे अगर पेड़ के साथ सूरज के बीच का कोई कनेक्शन अगर ढूंढना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि हम लोग पेड़ को सूरज के पास थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, कुछ दिनों के लिए, एंड देन कुछ दिनों के लिए हम लोग सूरज के पास से हटा सकते हैं। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि पेड़ सूरज के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि सूरज नहीं होने से पेड़ के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, और या फिर सूरज के होने से पेड़ के ऊपर कौन सा इफेक्ट होते हैं। तो इससे हमारे बीच हमें पता चलता है कि एक सूरज और पेड़ के बीच में क्या कनेक्शन है। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सूरज, तो सूरज को हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और डिपेंडेंट वेरिएबल है पेड़, तो इसके ऊपर हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये एक मैनिपुलेशन होता है वेरिएबल्स से, जिससे हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी और रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। Question 3, the first step of research is Option A, selecting a problem. Option B, searching a problem. Option C, finding a problem. Option D, identifying a problem. So the correct answer is identifying a problem. So एक research conduct करने के लिए पहला जो step होता है वो होता है identifying the problem. देन उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है इवेलुएट द लिटरेचर, एंड देन थर्ड स्टेप होता है क्रिएट हाइपोथेसिस, देन वी मेक द रिसर्च डिजाइन, एंड देन हम लोग डिस्क्राइब पॉपुलेशन करते हैं, पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद डेटा कलेक्शन करते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स पे डेटा एनालिसिस करते हैं, एंड लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग और कंक्लूजन देते हैं। क्वेश्चन 4, research can be conducted by a person who Option A holds a postgraduate degree.
who has studied research methodology. Option C, processes thinking and reasoning ability. And option D is a hard worker. So the correct answer is who has studied research methodology. बेसिकली एक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हमें रिसर्च करने का मेथड जानने की बहुत ज़रूरत होता है, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में ही बोला कि रिसर्च का जो स्टेप्स होता है वो स्टेप्स को फॉलो करके ही हम लोग रिसर्च कर सकते हैं. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड रिसर्च मेथोडोलॉजी बिफोर कंडक्टिंग अ रिसर्च. सो we first studied research methodology and then we can make a research. Question 5. Research can be classified as option A, basic and applied and action research. Option B, philosophical, historical, survey and experimental research. Option C, quantitative and qualitative research. Option D, all of the above. So the answer is all of the above. तो रिसर्च कुछ भी हो सकता है, बेसिक रिसर्च हो सकता है, अप्लाइड रिसर्च हो सकता है, एक्शन रिसर्च हो सकता है. तो हम लोग जो भी रिसर्चर होता है वो अपने अपने सोच समझ के अपनी एरिया के हिसाब में वो रिसर्च करते हैं. सो दिस कैन बी ऑल ऑफ द टाइप्स. क्वेश्चन 6. Generalized conclusion on the basis of a sample is technically known as option A, data analysis and interpretation. Option B, parameter interference. Option C, statistical interference. Option D, all of the above. The correct answer is data analysis and interpretation. So conclusion का जो पहला स्टेप है वो है कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, देन वी आर इंटरप्रेटिंग दोस डेटास, देन हम लोग जाकर कंक्लूजन निकालते हैं. डेटा एनालिसिस के अलावा हम लोग कंक्लूजन नहीं दे सकते. सो डेटा एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर गिविंग द कंक्लूजन और रिजल्ट. सो जनरलाइज कंक्लूजन पे आने से पहले का जो स्टेप होता है वो होता है डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. Question 7. Bibliography given in a research report. Option A shows vast knowledge of the researcher. Option B helps those interested in further research. Option C has no relevance to research. Option D, all of the above. The correct answer is option B, who helps those interested in further research. So bibliography helps those interested in further research. Why is that? So bibliography is basically a list of works on a subject or by an author that were used or consulted to write a research book or article. It helps to verify fact and explore more information on the topic. So basically क्या करते हैं कि जो लोग फर्दर स्टडी करते हैं वो लोग उसके ऊपर और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं और भी नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. सो बिब्लियोग्राफी वो एक्सप्लोरेशन का फील्ड बन जाता है. उससे हमें बहुत ज़्यादा पेपर्स के बारे में, उसके ऊपर और जो भी रिसर्च हुआ है उसके बारे में हमें पता चलता है. सो it will help us to explore knowledge on that particular topic. So that's why the correct answer is the bibliography helps those interested in further research. Option 8. Question number 8. A research problem is feasible only when option A, it has utility and relevance. Option B, it has researchable. Option C, it is new and adds something to the knowledge. And option D, all of the above. The correct answer is all of the above. So एक research problem तभी भी feasible होते हैं. Feasible means capable of being done or carried out, या फिर suitable. तो research problem तभी suitable होता है जब भी इसके पास utility और relevance होता है, वो research एबल होते हैं, मतलब रिसर्च करने का लायक होते हैं, और ये कोई न्यू और कोई समथिंग कुछ न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं. तो ये सारे आंसर ही ऑप्शन ही करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 9. The study in which the investigator attempt to trace an effect is known as option A, survey research. Option B, summative research. Option C, historical research. Option D, ex post facto research. So the correct answer is ex post facto research. So ex post facto means basically after the fact. It basically determines the cause and effect relationship between an independent and dependent variable.
The independent variable cannot be manipulated or altered here, which in ex post facto research will look and how a particular trait affect a dependent variable. So basically ex post facto research में क्या होते हैं, आफ्टर इफेक्ट जो दो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उन दोनों के बीच में कनेक्शन हम लोग ढूंढते हैं. बट इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते. So this is how ex post facto research is basically different from the experimental research. ये हम लोग आफ्टर इफेक्ट कोई घटना घट जाने के बाद ही हम लोग ये रिसर्च कर पाते हैं. Question number 10. Fieldwork based research is classified as option A empirical, option B historical, option C experimental, and option D biographical. The correct answer is empirical. So why it is empirical? Empirical research is basically a research that is based on the observation and the measurement of a phenomena as directly experiments by the researcher. The result are based on the real life experiment. So fieldwork based research में हम लोग क्या करते हैं, कोई रिसर्चर एक फील्ड में जाकर वहाँ पे रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे डेटा गैदर करते हैं एंड तब जाकर उस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं. So fieldwork based research basically empirical research होता है because it based on the observation and real life experiment. Question 11. Fundamental research reflects the ability to option A synthesize new ideas, option B expound new principle, option C evaluate the new existing material concerning research, and option D study the existing literature regarding various topics. The correct answer is expound new principle. So fundamental research basically basic and applied research को बोलते हैं. So it is driven by the curiosity and the desire to expand knowledge in the specific research area. हम लोग एक particular area में जिसके ऊपर कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में जानने के लिए ये अप्लाइड और बेसिक रिसर्च को कंडक्ट करती है, जिसका दूसरा नाम है फंडामेंटल रिसर्च. सो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल. Question 12. The main characteristic of a scientific research is option A empirical, option B theoretical, option C experimental, and option D all of the above. The correct answer is all of the above. So scientific research करने के लिए empirical, theoretical और experimental सारे के सारी चीज़ों का होना बहुत important होता है. सारे characteristics are very important in experimental. Question 13. Authenticity of a research finding is its option A originality, option B validity, option C objectivity, option D all of the above. So authenticity, basically authenticity in research implies that they are genuine and credible and transparent. Okay, so objectivity in a scientific research also means without being influenced by any bias or personal opinions. So bias is an unfair preference for someone or something. So objectivity and authenticity, so both are very similar. ऑब्जेक्टिविटी और ऑथेंटिसिटी दोनों में कनेक्शन बहुत ज़्यादा है. सो ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स ऑब्जेक्टिविटी. द करेक्ट आंसर इज ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन 14. Which technique is generally followed when the population is finite? So finite एक पर्टिकुलर जब पॉपुलेशन होता है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन जब हमें पता चलता है तब हम लोग कौन से सैंपल को यूज करते हैं. सो इसमें हमें पता है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक को मोस्टली हम लोग यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि कौन सा पॉपुलेशन है, कितना लोगों के ऊपर हमें रिसर्च करना है. Question 15. Research problem is selected from the standpoint of researcher interest, B financial support, option C social relevance, and option D availability of the relevant literature. So the correct answer is the social relevance. सोशल रेलिवेंस मीन्स जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जिसका महत्व और गुरुत्व हो, तो उसमें उस
टॉपिक को देखकर ही हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं. So the correct answer will be social relevance. The research is always option A, verifying the old knowledge, option B, exploring the new knowledge, option C, filling the gap between knowledge, and option D, all of these. So the correct answer is all of these. रिसर्च हमेशा ही एक पुराने नॉलेज को वेरीफाई करने के लिए, न्यू नॉलेज को जानने के लिए और कुछ नॉलेज के बीच में जो गैप होते हैं उस गैप को पूरा करने के लिए किया जाता है. तो ये सारे के सारे रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए द रिसर्च का जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 17. व्हिच वन ऑफ द is called non-probability sampling. So the correct answer will be ऑप्शन में है क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन बी कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड ऑप्शन डी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमें पता है, उसके अंदर आते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग. सो यहाँ पे जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं, only except quota sampling. So quota sampling is the non probability sampling method. When a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable sampling method is option A cluster sampling, option B stratified sampling, option C convenience sampling and option D lottery sampling. जब पॉपुलेशन अलग डिफरेंट डाइवर्सिफाइड हो, जब उसके अंदर डिफरेंट टाइप का लोग हो, डिफरेंट वेरियस टाइप्स का पीपल हो, एक जैसा होमोजेनस ना हो पॉपुलेशन, तब हम लोग कौन से मेथड, कौन से सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. इसमें हम लोग पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रोटा में डिवाइड कर देते हैं एंड उन स्ट्रोटा से हम लोग कुछ सैंपल्स को कलेक्ट कर उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. Question 19. The process is not needed in the experimental research is option A observation, option B manipulation and replication, option C controlling and option D reference collection. So first of all एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन, ऑब्जर्वेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं एंड देन वो ऑब्जर्व करते एंड कंट्रोल करते इन वेरिएबल्स को. सो ये फर्स्ट इन ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बट डिफरेंस कलेक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. So the correct answer is the process not need in experimental research is reference collection. Question 20. A common test in research demands much priority on option A reliability, option B usability and option C objectivity and option D all of the above. So the correct answer is all of the above. बिकॉज एक रिसर्च की कॉमन टेस्ट करने के लिए, कॉमन टेस्ट के बाद ये सारी चीज़ें आंसर में होना बहुत ज़रूरत होता है. Reliability, usability and the objectivity. So the correct answer is all of the above. Question 21. Which of the following is the first step in starting the research process? Option A searching sources of information to locate the problem. Option B survey of the related literature. Option C identification of the problem. Option D searching for solution to the problem. So the correct answer is identification of the problem. जब मैं रिसर्च स्टेप्स के बारे में बोला था तो सबसे पहले जो आते हैं वो है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम लोग रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रिसर्च हम लोग शुरू ही नहीं कर सकते. सो द करेक्ट आंसर विल बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम.
Question 22. The research problem is not feasible only when option A, it is researchable, option B, it is new and adds something to the knowledge, option C, it is consist with the independent and dependent variable, option D, it has utility and relevance. So our research problem is not feasible or not suitable. हम लोग उस रिसर्च को कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को जब the correct answer is it consists of independent and dependent variables. Question number 23. Manipulation is always a part of historical research. Option B, fundamental research. Option C, descriptive research. Option D, experimental research. So manipulation is always the most important thing in the experimental research. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में मैनिपुलेशन करते हैं. उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या कनेक्शन. Question 24. The research is always which is exploring new facts through the study of the past is called option A, philosophical research, option B, historical research, option C, mythological research, and option D, content analysis. So the correct answer is option B, historical research. Question 25. A null hypothesis is option A, when there is no difference between the variables, option B, the same as the research hypothesis, option C, subjective in nature, and option D, when there is difference between the variables. So the correct answer is option A, when there is no difference between the variables. जब हम लोग एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं निकलता, उसको हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलते हैं और उस हाइपोथेसिस को जनरली हम लोग रिजेक्ट करते हैं. Question 26. We use factorial analysis. Option A, to know the relationship between the two variables to test the hypothesis, option B, option C, to know the difference between two more variables, or option D, to know the difference among the many variables. So factorial analysis is basically a statistical technique to understand the difference among the many variables. इसमें जब एक रिसर्च के अंदर अगर बहुत सारे वेरिएबल्स होता है, उन वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन ढूंढने के लिए हम लोग फैक्टोरियल एनालिसिस को यूज करते हैं. Question 27. Which of the following is classified in the category of the developmental research? So developmental research के अंदर कौन सा रिसर्च आएगा? ऑप्शन ए, फिलोसॉफिकल रिसर्च, ऑप्शन बी, एक्शन रिसर्च, ऑप्शन सी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. तो डेवलपमेंटल रिसर्च मीन्स जब जिस रिसर्च के बाद उस पर्टिकुलर नॉलेज का डेवलपमेंट होता है या फिर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट और फिनोमेना का डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं. तो रिसर्च का मतलब ही होता है नॉलेज का एनहांस करना, नॉलेज का डेवलपमेंट होना. सो बेसिकली ये सारे रिसर्च ही डेवलपमेंटल रिसर्च होते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. Question 8. Action research is option A, an applied research, option B, an research carried out to solve immediate problem, option C, a longitudinal research, and option D, all of the above. So action research वो रिसर्च होता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इमीडिएट कोई घटना हो, उस घटना का जो रिजल्ट है वो हमें जानने के लिए, उस घटना का कॉजेज हमें जानने के लिए, एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसे अभी की तुरंत सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च कंडक्ट किया जाता है उसका हम लोग एक्शन रिसर्च बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम में जब कोरोना आया था तब उस टाइम में कोरोना से मुक्त होने के लिए जो रिसर्च कंडक्ट किया गया था उसको हम लोग एक्शन रिसर्च बोलते हैं. उसी मोमेंट वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब हम लोग जनरली एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करते हैं. So the correct answer is action research is basically a research that carried out to solve immediate problems. Question 29. The research that applies the laws at the time of the field study to draw more and more clear ideas about the problem is option A, applied research, option B, action research, option C, experimental research, option D, none of these. So the correct answer is applied research. Question 30. How can the objectivity of the research can be enhanced?
ऑप्शन ए थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, ऑप्शन बी थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, एंड ऑप्शन सी थ्रू इट्स वैलिडिटी। सो एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिविटी जो कि अनबायसनेस होता है, जो कि उसका ट्रस्टवर्दीनेस होता है, ये कैसे बढ़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इम्पार्शियलिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एक रिसर्च का रिजल्ट में ज़्यादा होते हैं तभी वो रिसर्च का ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। थैंक यू।